will hold for count of 4. So it's like a box. 4 काउंट पे ब्रीद इन करेंगे, 4 पे होल्ड करेंगे, 4 पे एक्सेल करेंगे, 4 पे होल्ड करेंगे. सांस अंदर लेंगे, रुकेंगे, छोड़ेंगे, रुकेंगे, 4 बार गिनेंगे. I have a music for this. I will play that music. तो उस म्यूजिक के साथ में आपको सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा कि हाँ भाई ये वाला म्यूजिक सांस अंदर लेने का है, ये होल्ड करने का है. I just play it. Bhaiya, I'm just going to mute everyone once and then. Is the music audible? ये होल्ड है, ये सांस अंदर लेने की है, होल्ड, सांस छोड़ेंगे. अब इसमें आपका एक हाथ आपके चेस्ट पे होना चाहिए और एक लोअर एब्डोमेन पे होना चाहिए, ताकि जब आप सांस अंदर लेंगे तो एब्डोमेन बाहर आएगा और जब आप छोड़ेंगे तो वो अंदर जाएगा. तो यू विल फील इट. सांस जब अंदर लेते तो डायफ्राम बढ़ता है तो लोअर एब्डोमेन बाहर होगा थोड़ा, और होल्ड करके रखेंगे तो वहीं रहेगा, छोड़ेंगे तो अंदर जाएगा. टेक 2 deep breaths and relax first. Sit straight because आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए ताकि सांस अंदर बाहर करने में कोई रुकावट ना हो. Are we starting now? Yeah, just 1 minute. Okay. Now I'm just telling you to breathe in, hold, breathe out, and we'll start now. Exhale हो रहा है अब. We'll start now. Breathe in, hold, breathe out, hold, breathe in, hold, breathe out, hold, breathe in. सांस अंदर लें, रुक जाएं, छोड़ें, रुक जाएं, breathe in, hold, breathe out, hold. कर लें, छोड़ें, अंदर लें, रुक जाएं, छोड़ें, रुक जाएं. बार और करेंगे. हाँ, breathe in, hold,
breathe out, hold. Last. Relax. लंबी सांस ले, छोड़े, 2 सांसें ले ताकि बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन नॉर्मल हो जाए. Relax. Thank you. Yeah, we are done with 5 minutes. Yes, thank you. Good breathing. Yes. पसीना आ गया. The body becomes warm na when you do that proper synchronized breathing. You start feeling warm. Thank you, thank you, thank you, and good morning, everyone, and welcome to day 4. कल हम बात कर रहे थे about our health. Today also we will continue about our health, and tomorrow also we will pick up chapters which are related to our health. So kal we spoke about how every part of our body we can give gratitude through the meditation. Sorry, we forgot to send you the meditation yesterday, but today by end of day I will send the meditations on the group. जो मैंने कल मेडिटेशन कराया था वो है पूरा इंग्लिश में ही, but it is exactly the way I had done it yesterday. So you can practice it. आपको जब भी मन हो, you can practice it at least in a week. I would say 3 बार उसको practice कर लो. So you are giving very consciously and intentionally. You're giving a lot of gratitude to your health. We also wrote about the gift of health is keeping us alive, or the gift of health is keeping me alive. And to remember, हमारे अच्छे हेल्थ का हमें बहुत बात करना है, और अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो केवल उन लोगों से ही बात करनी है जो हमको हेल्प कर सकते हैं. सो प्लीज रिड्यूस द लेवल विथ whom you are talking about your ill health. Also reduce whatever information you are getting from various sources. इतनी information की कोई जरूरत नहीं है. It is only creating fear in our energy body. Okay. Now, today's chapter that we have selected is got to do directly with what is the fuel that you are putting inside your body, which is our magic ingredient. And what is this food? Sorry to disturb you. Rajveer has come. Yeah. He can come and show. Come, so thank you so much. Then he can run away back. Yeah. Can you show us your magic rock? This is my magic rock. And what have you written on it? Rajveer Magic Rock. How nice. And are you using it at night? And thank you and blessed. So nice. And he has written a thank you also behind. Very beautiful. Yeah. Harry Potter wand. And Oh, wow, I'm a big Harry Potter fan. So he's saying whatever I want, I'll get. Yes, absolutely. Lovely. Thank and you. he made this also. What is this? My thank you jar. Your thank you jar. How nice. So in the night, whatever I do in the day, I will write it in this. Very nice. So whatever he's happy about. He's written that. Yes. We had made this gratitude. Yeah. Yes. How lovely. So he'll fold it and he'll put it. So he's written his points and then he's Very sweet. How nice. Lovely. Thank you so much, Rajveer, for sharing that with us. It's giving us more ideas. So we can all. This is my daughter's. That's it? That's my daughter's. Okay, both of them have made one. Lovely. Yeah, so she writes 1 point because she doesn't know how to write, really. And he writes 3-4 points. 3-4 points. Lovely. Great going, Rajveer. We are really proud of you. Thank you so much for sharing. Thank you. So, the other day somebody was asking कि बच्चों को कैसे कराए, and हम चाहते हैं कि बच्चे करें. It's only when they see you do it, and कुछ देर तक आपको करता हुआ देखना जरूरी है. उसके बाद ही they will start doing it. My daughter has made a big gratitude wall, and she stuck a whole lot of post-it notes
on that gratitude wall, and every time something special happens, she writes it on that post-it notes, and her aim is by the end of 2 months the wall should be complete. So there are various ways in which children can pick it up, and thank you so much, Ritika, for sharing that with us. I'm sure they'll feel very excited when they see it, that we are sharing it with others as well. Thank you so much. Right, so coming back to the topic of food and water. So how are we taking care of the fuel that we're putting inside our body? Now let's imagine you have a Maruti 800 and you have a Mercedes. उन दोनों के fuel में there is a difference. Why? Because the engine is different. अब आपको अपने आप के लिए डिसाइड करना है, do you want a body which is as expensive, as smooth running, as good an engine, as comfortable as a Mercedes, or do you want it like a Maruti? I have nothing against a Maruti car, and not like I'm very fond of a Mercedes. This is only to make you understand the difference between the two categories. So जो चीजें हम डालते हैं अपने अंदर, Aarti, recording is not happening, but the YouTube link is on. I'm not recording the thing. Is the YouTube on? Can somebody just check and tell me once? Yeah, it's working. Yeah, thank you. Thank you for pointing it out, but we're not recording this. It's just going live on YouTube. So what we put inside us is what is going to determine the quality of our life. So जैसे बोलते हैं ना कि जो आप खाते हो उसी से आपके शरीर, जैसा तन वैसा मन और वैसा अन्न. So जैसा अन्न वैसा तन. So these are all interlinked. So today what we're going to read about is the magic ingredient. Again, I will read only small parts of this chapter, and you can read it again on your own. But what you need to keep in mind very, very strongly कि जब आप खाना बना रहे हो और जब आप खाना खा रहे हो, उस समय आपके mental thoughts क्या है is very, very important, because that is what either energizes the food or completely ruins the energy of the food. So this is very important, and our health is directly linked to it. Okay, so what I'm going to read today is the magic ingredient, and it will also explain how we can have this magic ingredient in a very small way in our tables, or it can be kept in our kitchens. So अगर किसी दिन हम भूल भी जाएं कि अरे I want to sprinkle a lot of magic in the food, वो magic ingredient का जो डब्बा रहता है, that reminds us. Okay, so what is this magic ingredient? A thankful heart hath a continual feast. तो अगर हम अपने मन से कोई चीज खाते हैं, या अगर हमारा मन ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ है, बहुत नियामतों से भरा हुआ है, शुक्राना से भरा हुआ है, तो अगर हम सादा खाना भी खा रहे हैं, वो भी एक पूरे टाइप के पकवान के जैसा है. So even if it is regular food, it becomes a feast if we are cooking it with gratitude and if we are eating it with gratitude. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. So ये अभी की बात नहीं है, ये सदियों से हमको अपने बड़े बुजुर्ग भी बोलते आए हैं कि खाना खाने के पहले हाथ जोड़कर अन्न देवता का शुक्रिया करना चाहिए कि आज अभी आपने मुझे खाना दे दिया, और जो भी आप बोलना चाहे, that you just say a small note of gratitude. Christians में तो ये बहुत important होता है कि they say a prayer before they start eating as a family, and they call it giving grace. Grace is also a word which is related to gratitude. So in different religions, they say it in a different way. But we in this fast-paced life of ours have forgotten to do this. So starting from today, अगर आदत छूट भी गई थी, रिविजन का मतलब है उस आदत को वापस से लाना. तो अब से please make it a point कि it hardly takes less than a minute
to just fold your hands and to say thank you, thank you, thank you for this delicious food that I am going to eat. And I know this food is going to make me healthy, strong, and energetic. Itni si baat bolni hai. In fact, takes less than 30 seconds. But when we say it and we eat it, it energizes the food. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. जिस दिन हम व्रत करते हैं, जिस दिन हमको पता होता है कि आज हमको रात को ही खाना खाना है, उस समय हमको रियली समझ आता है कि भूख क्या होती है. एंड दैट टाइम वी नो कि केवल भूख से ही, केवल खाने से ही we can start feeling energetic again. So now you understand how important food is in our lives. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. अब इसको एक स्टेप आगे अगर हम लेके जाएं, तो ये सोचे कि ये खाना जो हमको अभी नसीब हो रहा है, वो इतनी आसानी से नहीं आया है. वो कहाँ उगा है, कहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ है, फिर किस वेंडर ने उसको खरीदा है, फिर या तो आपने उसको ऑनलाइन ऑर्डर किया है या आप जाकर उसको लेके आए हो. तो देयर इज अ होल प्रोसेस. कितने लोग हैं इन बिटवीन. अगर वो बड़े बड़े और फार्म्स में उग रहा है खाना, तो रात भर एक ट्रक ड्राइवर उसको ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं. सो इट इज लाइक अ ह्यूज ऑपरेशन. और हम बड़े आसानी से बोल देते हैं कि आजकल सब्जियां ताजी नहीं मिल रही, आजकल ये बड़े महंगे हो रहे हैं. सो वी आर unnecessarily energizing all that food with negative energy. If we just think for a second कि ये पालक जो हम अभी खा रहे हैं, जहां पर भी बैठ के खा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल दिल्ली पालक, वो उगी कहाँ है, कहाँ से ट्रांसपोर्ट हुई है, फिर कहाँ उसको सुबह 3 बजे 4 बजे जाकर आपके लोकल वेंडर ने उठाकर आपके घर के पास के दुकान में रखा है. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. एक बार अगर हम उसके बारे में माइंडफुल हो जाए, तो हम कभी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रोसरीज, किसी भी चीज के लिए कंप्लेन करना बंद कर देंगे. For you to eat fresh fruits and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them for over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, packers, distributors, transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. और ऐसा नहीं है कि कल बीज बोया फार्मर ने और आज सुबह ताजी फसल हो गई. उनको फार्मर्स को भी कितना टाइम लगता है, कितनी देर उन्हें उसको सींचना पड़ता है, उसको कीटाणुओं से हटा के रखना पड़ता है. There's so much care that the farmer has to take in order for the fruit and vegetable to be protected. Only after that it comes to our homes. Similarly, if you think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee tea growers, packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day. And it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, every home on the planet. तो ये एक ऑर्केस्ट्रा ही है. ऑर्केस्ट्रा में क्या होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं. बट अगर वो अपने ही ढंग से कुछ कुछ बजाने लग जाए तो वो म्यूजिक नहीं बनता. वो पता होता है कि फ्लूट कब बजनी है, फिर पता होता है कि ड्रम्स कब आने हैं, फिर पता होता है कि गिटार कब आना है, वायलिन कब आना है, और वो पूरे एक सिंक्रोनाइज्ड ढंग से एक के बाद एक बजते हैं. सिमिलरली आवर एंटायर फूड प्रोडक्शन, जिस ढंग से खाना उगता कहीं पे है, आता कहीं से है, फिर बनता कहीं है और फिर हमारे घरों में आता है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. सो इस पूरे प्रोसेस को
अगर हम gratitude से देखें तो हम everything that we are eating, we will be very very grateful for it, and we will stop complaining कि आज इसमें नमक ज़्यादा हो गया, आज ये मिर्च ठीक नहीं है, आज ये जल गया है. All these complaints of ours will go away if we just keep in mind what a long process it is for this food to come on our table. Food is a gift. It's a gift of nature, because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, the nutrients, and the water to grow food. Ab let's go a step even more deeper. कि आ कहाँ से रहा है? It is because of the soil, because of the water, because of the right amount of sunlight that all this is happening. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospital, fuel, mining, manufacturing industries, make our roads, make clothes, every consumer product like plastic, glass, metal, life-saving medications, and build our homes and every other building and structure. Water keeps our bodies alive. 60 to 70% of our body is water. So water, 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 glorious water. If there is magic on this planet, it is contained in water. So just like food is so important, and also that the soil, the nutrients, the sunlight, जिसके कारण ये खाना उगता है, वैसे ही इस खाने को उगाने के लिए हमें पानी चाहिए. और ये सारी जो लिस्ट मैंने अभी पढ़ी, इन सब जगह पे हमको पानी चाहिए होता है. तो food and water, two very important things that we are consuming every single day. और अगर इन बेसिक चीजों के लिए हम ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दे, तो बड़ी चीजों के लिए देना तो बहुत आसान हो जाएगा. बिकॉज हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? थिंग्स दैट वी स्टार्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड, कि पानी तो मिलता ही है या खाना तो आएगा ही आएगा टेबल पे, एंड वी स्टॉप गिविंग ग्रैटिट्यूड फॉर दैट. सो from now, our whole focus is to start giving gratitude for all the basic things that are there in our life. Today is food and water. Tomorrow we'll be talking about air and how these things are so vital for us to constantly give gratitude. Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our families and friends would be here. We wouldn't have this day or tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and joy because of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. And all that you have to do is what? That before you eat that food, just say thank you so much for this food, which is going to give me energy. Thank you so much for this water, which is going to make me fresh, which is going to keep me hydrated, which is going to increase my level of immunity. All that we have to do is just say a thank you. Now let's move into this, that one more part that we have to believe in, and I think I will stop reading from here and just explain this part, is when we are cooking the food. That is also very very important. Now आप जब खाना बना रहे हो, उस समय आपकी क्या एनर्जी है? आप गुस्से में खाना बना रहे हो, आप इरिटेशन में खाना बना रहे हो, आप खाना ऐसे बना रहे हो कि भाई काम नक्की होए, मैं दूसरा अपना काम करने लगूं, तो those are not the kind of energies that we want to send in the food. पहले के ज़माने में क्या होता था? बोलते थे कि घर की औरतें ही खाना बनाएं, and we would have cooks and maharaj and everything, but there would, I know at least about my grandmother, कि unless she was very clear that this cook comes from a certain category of people, she would not allow him to make the food. And why was that? It is not because उनको उस जाति से कोई problem थी, but उनका ये विचार था कि उसकी मन की भावना अच्छी होगी और तब वो खाना भी अच्छा बनेगा. But अब क्या हो गया है? Yes, we all have cooks. What is very important is to please keep the cook very happy. That is very very important. If you yourself are making the dishes,
then make sure you're making it with a happy heart. And the easiest way to do that is to either play some music. There are people who play some shlokas or Gayatri mantra ya jo bhi aap chahe. And I feel or kuch nahi hoye to just play Bollywood music. Because what happens with that, the minute you're listening to something that you enjoy, your feelings automatically change. And the minute those feelings change, they get transported into the food that you're making. कई बार हम सुनने में भी आता है ना, आज लगता है खाना मन से नहीं बनाया है. What is that? कुछ उड़ने सिक्के सो जाता है खाने में, तो सबसे पहले यही बोलते हैं, लगता है आज मन से नहीं बनाया, लगता है आज गुस्से में बनाया है. So वो टेस्ट में भी आपके अंतर आ जाता है the minute your feelings change. So very, very important that be in a very happy zone when you're making the food. Whoever else is making the food in your house, keep them happy. That is also very, very important because उनका बनाया हुआ खाना ही आप consume करने वाले हो. जब हम pranic healing वगैरह करते हैं, we can easily make out the energy of the food. जो raw food होता है, जो vegetables and fruits होते हैं, उनकी energy सबसे ज़्यादा होती है. घर पे बने हुए खाने की एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है. बाजार से आए हुए खाने की एनर्जी सबसे कम होती है. Why? Because we don't even know where it is being cooked, or what is the mental state of that person who's there in that kitchen and is cooking. शायद he's sitting here and doing a job in a restaurant और उसकी पूरी फैमिली कहीं गांव में पड़ी है. उसको पूरे दिन यही टेंशन है कि मैं पैसे कैसे भेजूंगा, मेरे घर में क्या हो रहा है, छत टूट गई है तो मुझे छत रिपेयर करानी है. And all those thoughts are going into your food. So next time you eat food from outside, please pray a little longer. बिकॉज उसको एनर्जाइज करने में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा. सो दैट इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. और अब इसको याद करना या ये एनर्जी अपनी बना के रखने के लिए there's a very simple way to do it. जो हमारे ये सॉल्ट एंड पेपर शेकर्स होते हैं, उसको एक खाली बॉटल रख लो, उसके ऊपर जस्ट राइट मैजिक इंग्रेडिएंट. और मैजिक इंग्रेडिएंट क्या है? अंदर खाली है, कुछ नहीं है. बट दैट मैजिक इंग्रेडिएंट इज अ लॉट ऑफ योर लव एनर्जी which you are going to put on the food. So एक छोटा सा simple सा तरीका है, either keep it on your dining table or keep it in your kitchen. So खाना बनाते समय just उसको हाथ में लेकर, कुछ जाएगा नहीं उसमें क्योंकि कुछ है नहीं physically, materially, उसके अंदर nothing is there. But when you say I'm pouring this dish with a lot of magic ingredient, and what is that magic ingredient? Gratitude, or saying your thank you is your magic ingredient. If you want, you can even keep it on the dining table because खाना खाते समय उसको याद करके थोड़ा सा अपने खाने के ऊपर शेक कर लेने से you will just remember to be grateful. Remember I told the entire journey कि कहाँ बनता है, कितने तरीकों से बनता है. And you know, one of the reasons why right now the quality of our food is also not good because our farmers are very unhappy. Day in and day out, we are listening and we are hearing about the whole farmers, you know, how unhappy they are with the laws and how unhappy their living conditions are, and how in spite of all that they are cooking and making for the rest of the country, उनके खुद के घरों में खाने के लिए चीजें नहीं है. सो वो जब किसान इतने दुखी मन से उन यू नो अनाज को उगाएगा, वो एनर्जी सब उसमें ही आ जाती है. तो अब what is in our hands? We really can't go and support or do much about what the farmers can do. In our own little way, we can probably help some people. But the food that comes into our houses, at least usko hum energize kar sakte hain. That is the only thing which is in our control. Now, similarly, the water that we drink, very, very, very important. Please sit and drink water. खड़े होकर चलते फिरते बॉटल उठा के पानी नहीं पीना चाहिए. Sit down and pour it in a glass of water and drink. और सबसे सुबह का जो ग्लास, एक ग्लास पानी आप पीते हो, उस पानी को आप एनर्जाइज कर सकते हो by just saying some good things to the water. You can just pick up that bottle or pick up that glass and only say thank you so much. This water is going to make me feel so energetic.
या आपका जो भी एक गोल है, सबसे जो आपका प्रेसिंग गोल है, जिसके लिए आप बहुत चाहते हो, अगर इट कैन बी द हेल्थ ऑफ योर फैमिली और इट कैन बी द हेल्थ ऑफ somebody known to you, or it can be just your own health, say that to the water, because the water, the energy of the water changes. And Bhaiya will tell you about the Japanese scientist and how he spoke about the 3 jars. I think this we had also spoken when we had done this the last time. There is cooked rice, there is cooked rice in all the 3 jars, and I leave it for Bhaiya to explain that, and I will not get into that, but it is what you speak to the rice and how it changes. That makes a big difference to it. Similarly, it is the same Japanese scientist, Isaro, I forget his name. It's a Japanese name. I think Bhaiya Masaru Emoto. Yeah, Masaru Emoto, and how he showed that the entire constitution of water, the molecules in the water completely change when there is something beautiful said to the water, or when you say some harsh words to the water, how that molecule completely, or the entire composition of water completely changes. So just like it, आपके कटे वचन बोलने से या आपके अच्छे शब्द नहीं बोलने से पानी खराब हो जाता है या पानी की एनर्जी कम हो जाती है, सिमिलरली उसको चेंज करने के लिए यू कैन जस्ट चेंज इट बाय गिविंग इट अ लॉट ऑफ good and thoughtful energy. So these are 2 things that we would want you to really think about today when you're cooking your food and when you're eating your food. 1 meal a day at least. Please sit and eat in complete silence, because जब हम लोगों से बात करते हुए खाते हैं ना, हमको ध्यान रहता है हम कितना खा रहे हैं. वो 2 चपाती के बदले 3 चपाती खाई जाती है, दाल कम पी जाती है. There are a lot of things that can happen if you are chit-chatting and eating your food. So at least 1 meal, I'm not saying all the meals, but at least 1 meal a day, please sit in complete silence and eat. और तभी एक्चुअली आपको हर निवाले का, हर गासे का स्वाद भी आएगा, क्योंकि you will be eating it very mindfully. You will be enjoying it, you will be relishing it and eating it. So 1 is to have or keep in mind when you are cooking your food, what energy you need to have. And the 2 is when you are eating that food, and you can just keep that small bottle of a magic ingredient over there. तो कभी अभी भूल भी जाए, अगर हम हड़बड़ में खा रहे हैं और हमें ध्यान भी नहीं आया, उस मैजिक इंग्रेडिएंट को देखते ही आपको याद आ जाएगा कि अरे I haven't said my grace, or I haven't given my gratitude to the food that I am eating. And even for water, to keep that first glass of water, talk to that water, thank that water, whatever you desire, you can tell that water, and you can tell the water, thank you so much for the great news I'm hearing that all my relatives are doing so well, everybody is healthy. Whatever you want to hear, you can just talk to that water. Because what happens with the food and water, again, they do the same thing. They help you to change the energy body around you. And once the energy body starts changing, the feelings start changing, the vibrations start changing, then the universe picks up your vibrations. So remember, we need to fine tune our radios to what we want from the universe. So for which constantly we have to keep changing our energy body. So when we eat with a lot of love and gratitude, it has the same effect on our energy body, and we start feeling the love and energy in our energy bodies as well. Okay, so that's all from my side. Late night mein ki. Okay, all right, I'll read that later. Bhaiya, you can take over and then we can take questions. Yeah. वो अपने बड़े बुजुर्गों की कुछ कहावतें हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जो रुचि ने पहले बोला था. आई एम जस्ट रिपीटिंग कि जो आप अन्न खाते हैं वैसा आपका मन हो जाता है. और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जब भी आप किसी पंडितों को, मतलब जनरली आप देखोगे तो वो जो फर्स्ट बाइट होता है, फर्स्ट कॉर होता है, फर्स्ट निवाला जो होता है, वो पहले निकालते हैं, उसको साइड में रखते हैं और फिर पूरा पानी को प्लेट की तरफ से छिड़क के छोड़ देते हैं. दिस हैज अ वेरी साइंटिफिक रीजन. वो जो मंत्र उच्चार करके जब वो पानी छिड़कते हैं
तो वो फूड की जो भी नेगेटिविटी अगर है कि उनको भी मालूम नहीं है कि वो खाना किसने बनाया है। आजकल तो ब्राह्मण भोजन में भी केटरर्स रहते हैं, तो यू डोंट नो कि वो केटरर्स ने कैसे क्या बनाया है, तो दे जस्ट रिमूव द नेगेटिविटी, और वो मंत्र उच्चारण का जो एक माहौल रहता है उससे पूरा का पूरा खाना जो रहता है वो इतना अच्छा पॉजिटिवली एनर्जाइज हो जाता है कि बाद में जब वो लोग लेते हैं तो जब आप उनको परोसते हो और जब पूछते कि पंडित जी तृप्त हुए, तो वो यस वो बोलते हैं कि हाँ भाई हम तृप्त हुए, क्योंकि वो जब एनर्जी ही पॉजिटिव हो जाती है तो खाने का मतलब एज रुचि हैज वेरी वेल टोल्ड कि वो जब वो अंदर जाता है तो वो एक आपका एक्सटर्नल बॉडी को भी उतना ही पॉजिटिवली करता है। दूसरा, फूड इन साइलेंस। खाना क्यों शांति से चुप बोलते ना, प्लीज कीप क्वाइट व्हेन यू आर ईटिंग फूड। देयर आर मेनी रीजंस टू इट। साइंटिफिकली भी अगर देखिए तो जब आप चुप रह रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन मुंह का जो है मतलब चबाने पे जा रहा है, बोलने पे नहीं जा रहा है। जब आप चबाते हैं तो वो खाना जो है तो वो इतना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बन जाता है, इतना बराबर उसमें आपका थूक मिल जाता है, और जब वो अंदर जाता है तो वो पचता भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि भाई वो खाना खाली अंदर जाके बस वापस से अटक जाएगा, नहीं। जब आप चुप रह रहे हैं, चबा रहे हैं, तो वो खाना पचेगा भी अच्छा। अब जैसे कि मसारू इमोटो का जो वो एक राइस का एक्सपेरिमेंट है, इट इज अ प्रूवन थिंग। मैंने कई बार देखा है कि लोग बोलते हैं आप ये करो मत करो, बिकॉज इट इज लाइक अ लॉ, वो प्रूव्ड हुआ हुआ चीज है। आप अगर दो जार लेते हैं, दो बर्तन लेते हैं, उनमें चावल पके हुए रख देते हैं, एक पे आप लिख दो हैप्पी जार या पॉजिटिव जार या गुड वाइब्स लिख दो, दूसरे पे आप नेगेटिव जार बैड वाइब्स और नेगेटिविटी लिख दो, और दोनों जार पे जब भी आप उस जगह से पास करते हो, गुड जार को बोलो कि आप बहुत ही अच्छे चावल हो, आपका स्वाद बहुत ही अच्छा है, आपसे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है हमको। ऑपोजिटली जब वो नेगेटिव जार के पास जाते तो तुम बहुत ही फालतू चावल हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुमको तो खाएंगे तो हमको बदहजमी हो जाएगी। जब आप ये चीज बोलोगे, और ये अगर आप कंसिस्टेंटली, जनरली चावल की शेल्फ लाइफ मतलब पकने के बाद में शेल्फ लाइफ क्या होनी चाहिए, 1 दिन 2 दिन, खराब हो जाना चाहिए। लेकिन आप ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे कि वो जो गुड वाइब्स वाला जार है वो खराब नहीं होता, और जो बैड वाइब्स वाला जार है वो शायद उस दिन शाम को ही काला होना, या उसमें वो फंगस आना, या उसमें वो मतलब लाल हरा कुछ भी कलर आके उसमें खराब होना चालू हो जाएगा। तो ये होता है वाइब्रेशंस, एनर्जी, जो आप एनर्जी देते हैं अपने खाने। आप अपना यही एग्जांपल बच्चों के साथ देना, जब आप जिस दिन आप बच्चों को बेटा तू बहुत राजा बेटा है, तू बहुत अच्छा कर सकता है, तो उसके अंदर भी एक इमीडिएटली फीलिंग आती है कि आई एम अ गुड बॉय। और वही अगर उसको बोल देगा यू आर अ बैड बॉय, यू आर स्टूपिड, तो उसको भी लगेगा कि नहीं मैं कोई काम का ही नहीं हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग। सो दीज आर थिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर गिविंग व्हेन यू आर गिविंग इट टू योर फूड। मैजिकल इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जब आप वो खाना बना रहे हैं, अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं, आज मुझे मेरे बच्चों को या आई वांट टू गिव माय फैमिली गुड फूड, तो यू विल लुक एट द बेस्ट ऑफ द रेसिपी, आप उसको एकदम सिस्टमैटिकली देखोगे। और वही अगर इग्नोर कर दिया तो दाल में नमक 2 बार क्यों पड़ जाता है भाई, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, यू डोंट कॉन्सेंट्रेट। अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो नमक डाला है या नहीं डाला मालूम ही नहीं है, और उसके बीच में किसी सहेली का फोन आ गया और उसके साथ में कल की सीरियल डिस्कस होने लग गई, तो कल की सीरियल का टेंशन जा रहा है उस खाने में। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू अवॉइड। जब आप फोकसली सी अगेन, एनर्जी गोज वेयर एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज। तो अगर आपका फोकस उस खाने पे रहेगा तो आप देख लोगे भाई इसका टेम्परेचर बराबर है कि नहीं, ये बराबर से उबला है कि नहीं। चावल जब पक जाता है तो कैसे उसको, अगर आप कुकर में नहीं बना तो कैसे आप उसको दबा के देखो कि पक गया कि नहीं पक गया। सो दीज आर कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स विच यू हैव टू चेक, और जहां आपका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो चीज अच्छी ही होगी। A very good example, we have 100 people here on Zoom who are concentratedly following. There are many on YouTube who are concentratedly following what we are telling. तो जब आप अब वो concentration देंगे तो ये gratitude आपके लाइफ में आना ही है। ये जो एक भावना है, ये आपकी जब भावना ही चेंज हो जाएगी, और जब आपको मालूम ही पड़ जाएगा कि कृतज्ञता का जो नियम है वो सबसे बड़ा नियम है। जिसके पास जितना है उसे उतना और दिया जाएगा, उसके पास में वो भरमार रहेगा, और जिसके पास में नहीं है उससे वो छीन लिया जाएगा। तो इफ यू हैव द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर फूड आल्सो, द फूड इज गोइंग टू टेस्ट ऑसम।
आपकी भावनाएं उसके साथ में जुड़ी हुई है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका मूड अच्छा है, आपने खाने में अगर कोई गलती भी कर दी है तो आपके घर वाले जो आसपास में बैठे वो उसमें कंप्लेन नहीं करेंगे कि नहीं होता है ना। और वही अगर आप आगे लो खाना खा लो, अगर आपने आके बोल दिया लो खाना खा लो, तो वो खाना खाने के लिए ही खाना है, उसको एंजॉय नहीं करना है। तो आपको वो चीज को एंजॉय करना है। वन मील यू शुड हैव इन साइलेंस। पानी जब भी पियो तो पानी को ग्रेटिट्यूड दो, क्योंकि द मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर बॉडी इज वाटर। तो वो जब पानी अंदर जाएगा, अगर वो खून ही बन जाएगा इमीडिएटली, तो आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाएगा ही ना। और वही आप खड़े खड़े बस घाई घाई में पी रहे हो। दीज थिंग्स आर व्हाट वी हैव टू अवॉइड. So it is again a replication of what Ruchi is telling, but मेरे अपने words में, और थोड़ा थोड़ा उसको मैं change करके ही बता रहा हूँ ताकि ये register हो जाए अपने दिमाग में. Gratitude, 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 and I am very thankful to everybody. कल सबने जितना जो thank you बोला है, आज भी वैसे ही करें, क्योंकि ये जो भावना है ना thanks की, कल किसी ने mention भी किया कि मेरे को देख के मेरा बेटा भी या बच्चा भी thank you बोलने लग गया. So this is what it is कि जो आप करोगे वो आपके बच्चे देखेंगे और आप अच्छा ही कर रहे हो. आई एम श्योर आप अपने अच्छा थैंक यू बोलना तो अच्छा ही है. गलतियां होती है, लेकिन गलतियों को इग्नोर करके उसमें से भी कुछ अच्छाई ढूंढ ले, तो इट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये राइस एक्सपेरिमेंट अगर आप लोग करना चाहे तो करके भी देख सकते हैं, बट अगेन आई एम टेलिंग इट इज अ प्रूवन फैक्ट. we have done it in other groups. They have done it, they have sent us the pictures कि ये देखो हमारा ये वाला खराब हो गया, अच्छा हो गया, तो ये हो चुका है. I think Ruchi, that is all. You can just take forward. So I'm just seeing if there are any questions or anything. Tina, would you like to share, because you've written an interesting one about cake में क्या हुआ? So would you like to talk about it and tell us? Yes, sure. Actually, रात को 9 बजे मेरी लड़की आके बोली कि केक बनाना है. मैं बोली पूरा दिन तेरे को नहीं सूझा, और अब जब मेरे को रेस्ट करने का मन है और तूने बोला कि केक बना दो, तो मैं बहुत इरिटेटेड थी. बट ठीक है, जैसे सारी चीजें कलेक्ट किए. हाँ, तो हम लोग सारी चीजें कलेक्ट किए और बनाए. केक बना तब तो थोड़ा फ्लफी हुआ था, थोड़ा सा ऊपर आया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पूरा केक ऐसे ही जम गया. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इतना इरिटेशन में वो केक बना, इसलिए वो अच्छा नहीं बना. नहीं तो मेरा केक कभी बिगड़ता ही नहीं, हमेशा फ्लफी अच्छा रहता है. तभी रियलाइज हुआ कि गुस्से में बनाया हुआ क्या मजा आया. ना कोई वो एंजॉय करके खा पाए, ना हम लोग उसका एक्चुअल ना अच्छा बना. तो अभी बरोबर ये कनेक्ट हुआ, तभी मैं लिखी कि ये केक का ऐसा बेस्ट एग्जाम्पल है. केक तो जनरली बेकिंग सोडा वो डालते तो अच्छा फ्लफी होता ही है, लेकिन जो गुस्सा इरिटेशन से मैं वो बनाई, वो केक ही जवाब दे दिया कि कितना यूजफुल था वो गुस्सा. But I will also put it like it is happy realizations. These realizations are very important. आपने जो रियलाइज किया और आपको फाइनली, तो अब आपको बेटी अगर 12 बजे भी बोलेगी ना कि केक बनाओ, तो सबसे पहले आप ये रियलाइज करो कि मेरे को इरिटेट नहीं होना है, या तो बनाना ही नहीं है. एग्जैक्टली, या बनाना ही नहीं है, और बनाना है तो मन से बनाना है. इट इज लाइक दैट. बनाओ तो मन से बनाओ, वरना मत बनाओ. Yes, thank you, thank you, thank you. Thank you so much, Tina. There's one question on YouTube and I'd like to just answer that. And somebody has written very beautifully, अभी नाम मैं नहीं देख पा रही हूँ, जैसी वाणी, जैसा पानी वैसी वाणी. तो आप मीठा अगर बोलते हो तो ये भी होता है कि अगर आप पानी मीठा पी रहे हो तो आप बोलोगे भी मीठा, but actually it's also your energy that you're putting inside it, because same पानी घर वाले सब पीते हैं, लेकिन कुछ लोग मीठा बोलते हैं, कुछ लोग मीठा नहीं बोलते हैं. So it is also because of what energy you are giving to the water, which is very, very important. Do we write a date on your gratitude? Yes, you can write a date. This is just कि आप देखो कि रोज आप अपना gratitude लिख रहे हो कि नहीं. अगर आपको लगता है कि आप anyway नियम से रोज लिख रहे हो, तो ऊपर डेट लिखने की भी जरूरत नहीं है. But just out of habit, मैं स्कूल टीचर बहुत रही हुई हूँ for almost 12 years, तो सबसे पहले बच्चों को डेट ही लिखवाते हैं on top, just so that you know which day you are writing what. So that's the only thing. And the number of gratitude you want to write is completely up to you, but don't compromise for anything less than 10. So 10 तो लिखना ही है, 10 के ऊपर और जितना लिखना है, you can आराम से go ahead and write that. Yes. So any other questions, anything anybody else would like to share from? बंद कैसा करने का मीटिंग? Sorry?
कोई बोला कुछ क्या? I didn't understand. नहीं, अब हमको एक चीज बोलना है हाँ. कि द बेस्ट पार्ट इन द सेशन इज कि तुम इसका अगर एक स्क्रीनशॉट लेगा ना इस जूम का, तो ऑल द लेडीज आर हैविंग अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन देयर फेस. This is one very good thing that everybody is actually interested. They want to hear, they want to do is मतलब क्या बोलते हैं, इस चीज को एनग्रॉस करना है. और वही जैसे टीना ने बोला, अगर चिड़चिड़े स्वभाव में होते तो यहाँ वहां देखते देखते कोई तो वीडियो चालू करके अपना काम ही करने चले जाते. I am very thankful to all the beautiful ladies here for your smiling faces, for actually giving your 100% here and taking 1000% out of here. The way you all write thank you and thank you here, it is means yes, आप लोग को वो अच्छा लगा है, आप लोग उसको फॉलो करने के जज्बे में आ गए हैं. तो अब जब लास्ट डे रहेगा ना, तो उस दिन खाली एक ही क्वेश्चन रहेगा मेरा, जो कि उरी मूवी का है कि हाउस द जोश. और उस दिन मेरे को देखना है कि ये सबका आ जाए कि yes, the जोश is still going to continue. Very hard. Please keep it up. I am very happy. I am very thankful to all of you here. आपके चेहरे की मुस्कान देख के दिन बन जाता है. Thank you so much for saying that, Bhaiya. That's so sweet. I'm just going back to one more question here. Water staying calm and happy and speaking softly. How do we tell it? It's very simple. Take that glass of water in your hand and just say thank you so much for making me loving, kind, patient, healthy. जो आप अपने में चाहते हो कि आए, just ask the water to help you out with that. That's about it. और कुछ नहीं. Ma'am, I want to share something. Yeah, just 1 second. I'm just going to read out. Can few gratitudes be the same every day? Yes, it can be the same every day, but the reason has to be different. So even if you're saying the thank you every single day to maybe your child or your husband or your wife or anyone, but please make sure that the reason changes. That is what is very, very important. Okay? Yeah, go ahead. Sheila, you wanted to share. Yes. ओए मेरा पोता ने कॉइन swallow कर लिया मैडम. हाँ हाँ. ₹1 का कॉइन. तो डॉक्टर बोलता है डर नहीं है, 3 हफ्ते के अंदर आ जाएगा. और जब तक कॉइन नहीं आ रहा, डर लग रहा है. What should I write for him? So now just keep visualizing that the coin is coming out. Just visualize and say to yourself, आप मेरे को एक private message भेजना and I will tell you exactly उसको कैसे बोलना है. I will not be able to explain it now on the Zoom call, this thing, but all you have to do is just keep visualizing that the coin has come out. जो end result है उसको visualize करना जरूरी है. ठीक है? So just keep. There is one very good this which has come in the chat box. My husband is listening this session and he's commenting, telling me to follow what is being told. So I'm so happy it is not only the ladies, even the husbands are around, although they are not showing their faces, but वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई क्या मजा है इस चीज में. Same चीज रुचि same चीज. My husband had still kept first time जब आपने बोला था ये देखिए, जो आपने फर्स्ट टाइम लिख के दिया था मेरे को, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माय लाइफ. स्टिल ही इज कीपिंग दिस ऑन हिज पर्स. अभी तक उन्होंने अपने पर्स में रखा. ऑन अ नोट. आई होप. हाँ. यस, नोट के ऊपर ही चिपका के रखा है उन्होंने. तो जब हम वो नोट वाला, जब हम मनी वाला करेंगे, वी विल कम बैक एंड रिवाइज दिस. रियली इट हेल्प्स लाइक एनीथिंग. ऑलमोस्ट 1 year से ऊपर हो गया. रियली इट हेल्प्स लाइक एनीथिंग. Thank you so much. So happy to hear that. Yeah, Manju ji, do you want to? Thank you. रुचि जी, कल मैंने रसगुल्ले बनाए थे, तो मैंने उसमें इतना ग्रेटिट्यूड डाल दिया कि भाई ये अच्छे बनेंगे सब. वो जो मेरे पास में बैठे थे, वो क्या आप खोल के भी नहीं देख रहे हो. मैं बोली 100% मैंने इतना ग्रेटिट्यूड डाला तो बहुत अच्छे बनेंगे. सच में बोलती, बहुत अच्छे बने. So nice to hear that. Lovely. Yeah, Sarna ji, you want to say something? कल के लिए मैं बहुत थैंक यू. मेरा इतना हेडेक हो रहा था, इतना मेरे को अनईजी लग रहा था, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद में और दिन भर मैं अपने आप को बोल रही कि मैं हेल्थी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, स्वास्थ्य को पार मुझे जीवित रखना है. और रियली मेरा एनर्जेटिक दिन गया कल. Fantastic. लॉट्स ऑफ थैंक्स रंजन जी और रुचि दोनों को. Thank you very much. Thank you very much. Yes. So good, we'll call it a day. And आज हमको एक छोटा सा shaker लेना है, अगर आपके पास नहीं है. And those of you who are doing it for the first time, please read chapter number 8 today, because we were doing chapter number 8.
magic ingredient. So, and I have not read the full chapter. So please read it again in your own spare time. And we will just take a small glass shaker and we will write magic ingredient on that. And we will remember कि every time we are eating food, we will sprinkle a little bit of that, because उससे हमें याद रहेगा कि हमें gratitude के साथ ही कुछ खाना है. Yes. Thank you so much, everyone. And I will end the meeting now. Thank you. Thank you. Thank you for this Thank you beautiful so much, morning. Ruchi. My Thank daughter you is so also much. Thank you. Have a wonderful Thank day. you. Thank you. Wish you Where's your a very magic amazing box? day ahead, Ruchi. Thank you. Thank you. Thank Thank you you. so much. Thank you. Thank you, Bhaiya. Thank Thank you. you, thank you, Bhaiya. So The kids, sweet. your rocks rock. Where's your rock? We all want to see the rock. She has written so sweetly. She has written, I thank you for my mom and dad in her own handwriting. So cute. So sweet. Nice to see them. Yeah. Thank you, We'll show her sweetheart. tomorrow, Raisha? Yeah. Okay. Drop tomorrow. Done. Okay. Bye. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you so much.